Okay, so all of you can see the screen. So last previous classes we have been discussing about stresses. Basically, we have introduced the stress components, right? What are the stress components on 3D elasticity? We have studied 3D Hooke's law, right? In Hooke's law in 3 dimension. Also, we have seen the strain displacement components in 3 dimension. So what are strain displacement components? 3 normal strain, that is epsilon x, epsilon y, epsilon z, and we also have like 3 shearing strain components. So what are those shearing strain components? For example, in this slide you can see the right hand side, epsilon x, okay, epsilon y, epsilon z, these are normal strain, gamma xy, gamma yz, and gamma zx. Because shearing strains are complementary to each other, so gamma yx is same as gamma xy, gamma zy is same as gamma yz, and gamma xz is same as gamma zx. Okay, so now what are compatibility equation? It has two significance, one mathematically you can explain and one physical significance. Okay. From mathematical point of view, it asserts that the displacement UVW match the geometrical boundary conditions are and single value and continuous function of the position with which strain components are associated. So what is the meaning of this is the body must be pieced together. So I will show you one diagram. I think it is on the last slide. Okay, all of you can see this right hand side image. In this image, see, suppose you imagine the body divided into several cubes. Okay, parallelepiped A, B, C. There are 3 cubes in the 3D body. When the body deforms, okay, then it is likely to have normal strain and shear strain also. So body may have the strain, but the way we have prescribed epsilon x, epsilon y, epsilon z, gamma xy, gamma yz, that is very I would say arbitrary. Means this is the equation which we had seen is just geometrical basis. You must have seen that the change in the length, change in the angle, but epsilon x and epsilon y, whether they are related with each other, that is not given. Epsilon y and epsilon z, whether they are related with, so there is no connection between them. It is just arbitrarily by epsilon x. Mathematically, it is like this, but geometrically, whether it is really fitting, the solid body when it deforms. So in this diagram, you may see if it deforms, if you prescribe your strain components very arbitrarily, the right hand side figure you can see there will be gaps. There is no basically synchronization that happens between epsilon x, gamma xy, and there is no synchronization. Similarly, either it may deform this way that there is a gap. The right hand side you may see either it can deform in such a way it may overlap, okay, and it may be random. That all epsilon x, epsilon y may happen in a random direction. So we don't want our actually body to deform that way, right? There are gaps, there is no synchronization between the, because it is the 3 dimension, right? So we don't want our body to be deformed in such a way that either there is a gap, it is in scattered, or either there is a overlap. That is the physical signal. Okay. So what can we do? Only the compatibility equations, which we will try to derive, which will help in connecting the strain components with each other. Okay. Now what is mathematical significance that we will try to see. So physical significance is that, and mathematical significance is something. Let's say I am having u which is given as a function of xyz, because in 3 dimensional elasticity UVW all are function of xyz.
Okay, and that if you have been given u as a function, and then you are asked to derive the strain components, then you can simply do the differentiation, right? If u is a function of x, y, z, I can differentiate, of course, with respect to x. Other two, we can keep it as a constant. Similarly, I can, derive the epsilon y, and you can keep the other component as it is epsilon z. Also, you can derive, but given UVW in the function of xyz, you can get the strain components. But suppose you have been given strain components and you are asked to derive u from that. So which equation you will pick to get UVW? In another language, see कहने का मतलब क्या है? Suppose आपके पास यहाँ पे 3 displacement components है and you can get 6 strain components. That is straightforward approach. But suppose I am having 6 strain components and I want to get 3 displacement components. So this is inconsistent. Why inconsistent? मेरे पास 6 इक्वेशन है और मुझे सिर्फ 3 क्वांटिटी निकालनी. So this problem is called is mathematically inconsistent. जैसे आपने न्यूमेरिकल मेथड में भी देखा होगा, लीनियर अलजेब्रा में क्या है, अगर 3 अननोन है तो 3x3 इक्वेशन ही होने चाहिए. 5 अननोन है तो 5x5 मैट्रिक्स ही होना चाहिए. I cannot have like 6x6 matrix and 3 unknowns. Then how will I find my unknowns, right? So that is the mathematical significance, that these 6 strain components cannot be prescribed arbitrarily. We cannot use those equations. It's mathematically inconsistent problem. Not, I mean, well-posed, imposed. So इसको हम ill-posed बोल सकते हैं, ill-posed problem, where you have 6 strain component, but I want to find 3 unknowns. So that is not possible. So in that case, we will try to derive the compatibility equation. So how to derive? There are 2 groups. Okay, I will just read out if anything. It is the same thing what I spoke to you. Strain displacement relations involve 3 independent displacement functions u, v, w, which is the function of x, y, z. If these functions are known, the 6 independent strain components are determined by the differentiation. However, in many situations, strain data are available from the experimental work or anything, like you are measuring strain from experimental data or numerical analysis. If they are given as a function of xyz, it will be required to determine the displacement functions. इंटीग्रेट मतलब डिटरमाइन करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन कौन सा इक्वेशन में चूज करूं, 6 है और 3, तो उसमें से कौन सा है? सो दैट इज नॉट possible. Problem arises since the 6 equations are to be used to determine 3 unknown displacement functions. So if the strains are arbitrarily described, so this word is important. If strains are arbitrarily, मतलब अभी जो हमने strain displacement equation जो derive किए थे जो previous lecture में, that is arbitrary because it's completely geometrical based. There is no correction in between. So 6 equations are not expected in general to yield single value continuous function. So what we want to have single valued unique continuous displacement function. ये word important है, single valued continuous displacement solution for u and v and w. Certain restrictions must be imposed on the strain, and those are compatibility equations. So strain fields for which single value displacement solution exists are called compatible strain fields. Okay. So additional conditions are to be satisfied to limit the arbitrariness of strain fields are known as strain components. So we need to generate additional equations. So what are those equations? So we will try to see. So first group of equations are obtained. Okay, we differentiate equation 1. So ये जो first equation है, ठीक है, इसको हमें we have to differentiate twice with respect to y.
Okay, how to obtain compatibility equation, that we have to see. I will also explain the compatibility equation in terms of, your previous knowledge from theory of structures, that in the beam, also analyzing beam, you must have heard this word. We may discuss that also. Okay. So what exactly is the meaning of compatibility equation? So we need to differentiate first. I think you can, if you want to do, you can just do in longhand, or it is a straightforward procedure that we are going to do. So first equation epsilon x. I am having epsilon x. So you differentiate this with respect to y. अगर x है तो y के साथ करना है, ठीक है, twice, ठीक है. Then y होगा तो x के साथ करना है. ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक दूसरे जो दूसरी एक्सिस है उसके साथ वो हमें सिंक्रोनाइज करना है, इसलिए ये प्रोसीजर है. एप्सिलॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू x we have to differentiate with respect to twice, differentiate and just do the addition. Okay, so second equation you have to differentiate with respect to x twice and just do the addition. So that addition will be this. So you may, I think you may note down this equation in your notebook. Otherwise ये procedure थोड़ा complicated है, आप मतलब बाद में भूल भी जाओगे. So this equation you write. This is like group 1 equation. ये लिख लिया आपने? Okay. Now differentiate fourth equation with respect to x and y. So which is fourth equation, gamma xy. अगर मैंने ये पिकअप किया है epsilon x and epsilon y, then I have to choose gamma xy and then differentiate these, the fourth equation means 1, 2, 3, fourth equation with respect to x and y. So what will you get? Del square gamma xy by del x del y. So right hand side अगर देखोगे, if you see the right hand side, it is same as this. Del cube u by del y square by del x plus del cube v by del x square by del y. Forget about order of differential equation. यहाँ पे del y square है, del x है. अब पहले del x करो या del y square, that order is not going to make any difference. So you are getting exactly the same. So you can replace these, okay, on the right hand side, because this right hand side and this right hand side is same. So आप क्या करो, epsilon del square epsilon x by del y square plus del square epsilon y by del x square is equal to del square gamma x by del x del y. So finally what we are doing is, हमने epsilon x epsilon y को gamma x y के साथ कनेक्ट कर दिया. Now from the cyclic equation, what is cyclic notation? हाँ, उससे आप बाकी दोनों इक्वेशन मिले. ऐसे हमें 3 इक्वेशन मिले, मतलब एडिशनल 2 equations. So you write additional 2 equation from the cyclic notation from this. So this is group 1 equation. So just write down additional 2 equation from this. See, understand the process, what's going on there, and you can remember basically ये जो है mathematics है थोड़ा. x के जगह y, ठीक है, साइक्लिक मतलब x के जगह y, हाँ y के जगह z, z के जगह x, y के जगह z, ओके, del z square plus del square epsilon z divided by y square, okay, is equal to del square lambda yz divided by गामा है, इसको गामा बोल रहे हैं. हाँ, del z del del y, x के जगह y के जगह z. And second equation, third equation is you have to follow this. So del square epsilon z
del x. y के जगह z के जगह x, y के जगह z del z के जगह x. So if you want to check the answer, I think it is the same. Okay, so you may check your answers here, remaining two equations. ये दोनों जो इक्वेशन है, just check you are getting same answer. It is same, right? Okay, now second group, how do we obtain? This is first group. Second group of equations are obtained. Differentiate gamma xy, gamma zx, gamma xy. Sorry, gamma yz, gamma zx, gamma xy with respect to xyz. So अगर गामा yz है तो उसको x से डिफरेंशिएट करना है, अगर zx है तो y से डिफरेंशिएट करना है, xy होगा तो z से डिफरेंशिएट. So ultimately you get this. So you may note down these equations. Second group करके लिखो, adding first two equations, then deduct from the last equation. So just follow the order. Gamma yz is it del v by del z plus del w by del y. मतलब y और z से डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट क्या है, v एंड w है, और अल्टरनेटिवली डिफरेंशिएशन जाएगा, मतलब w होगा, देन अल्टरनेटिवली यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ y, और u होगा, सॉरी हाँ, v होगा तो अल्टरनेटिवली यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z. b जो है z के साथ वेरी होगा, तो del v by del y मत लिखो, it's alternate, right? Have you observed this formula? What is gamma yz? Del v you have to differentiate with respect to y plus is the shearing angle. Shearing angle जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मेरा x एंड y है, एक प्लेन की बात करें, गामा एक्स वाई की बात करें, अगर x एंड y है, this is vertical, right? This is vertical but changing with respect to v, changing with respect to x. जैसे v बढ़ रहा है बट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डेल v बाय डेल x, तो यहां पे डेल v बाय डेल x है, और यहां पे ये क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, u है. सो u इज इंक्रीजिंग, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. जैसे y चेंज हो रहा है वैसे u चेंज हो रहा है. सो वी आर राइटिंग डेल u बाय डेल y, राइट, अल्टरनेटिवली. एंड सिमिलरली ऑन द अदर प्लेन्स, सपोज z एंड y है, ठीक है, z एंड y प्लेन है, देन सेम वे यू हैव टू अल्टरनेटिवली, लाइक v जो होगा और w, ये w है और ये v है, v चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू y. सो यहां पे देखो yz, सॉरी y and z, so y, this is your w changing with respect to y, so this is your w changing with respect to y, this is your v changing with respect to z. So y आपके x एक्सिस में रहेगा, z आपके x. Similarly gamma zx. So those who have joined late, they have come late, please understand how these equations are forming. And okay, now coming back to the second, suppose gamma yz है, इसको मुझे del by del x, पूरी टर्म को del by del x से डिफरेंशिएट करके लिखना है. Then I have written this term, okay, plus this term, second term similar way, but you should know what is gamma zx, right? Gamma zx is what? You want to differentiate z with respect to y. So del by del y ब्रैकेट के अंदर
जेड एक्स है, सो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड अल्टरनेटिवली। कुछ डाउट है इसमें? पता चल सी શિયરિંગ સ્ટ્રેન્થ कैसे मिलता है? શિયરિંગ સ્ટ્રેન્થ તમને કેવી રીતના મળે? તમે આ પ્લેન કોઈ બી ઇમેજિન કરો, સપોઝ મારે ZX પ્લેન છે, બરાબર? देन आई हैव Z एंड आई हैव X। शियरिंग स्ट्रेन में क्या होता है? चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल विद डिस्टॉर्टिंग। जो शियरिंग स्ट्रेस लगेगा आपको, ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा ऊपर एंड नीचे, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ऐसे फ्रंट एंड बिहाइंड एंड टॉप एंड बॉटम। तो चेंज इन एंगल है वो हमें मेजर करना है। तो ये वाला एंगल कौन सा है? आप tan थीटा ले लो, थीटा, बट ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है ये मुझे मालूम है। दिस वन, व्हाट इज दिस वर्टिकल डिस्टेंस? इट इज x जा रहा है, मतलब u जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या जा रहा है? u जा रहा है, ठीक है। डेल u बाई डेल z, डेल z है क्योंकि z के विथ रिस्पेक्ट टू u चेंज हो रहा है, u पर है x, x एंड z प्लेन है ना, सॉरी z एंड x प्लेन है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? x एक्सिस ऊपर है, तो x के साथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा? u होगा। y के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? v होगा। z के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा वो w होगा। तो अगर मेरा z है, ठीक है, z डायरेक्शन मेरी ये है, तो हॉरिजॉन्टल ये जो वैल्यू है वो क्या मेरी w है, ठीक है। बट मुझे थीटा लिखना है, थीटा, तो मेरा क्या होगा? डेल w बाई डेल एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिखना है तो डेल w बाई डेल एक्स, स्लोप जो लिखते हैं आप, मतलब दिस डिस्टेंस और डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। सो डेल w बाई दिस डिस्टेंस इज डेल x एंड दिस डिस्टेंस इज डेल w। मतलब w आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, एंड इसमें u आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। u क्यों लिखा है? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? x एक्सिस जो जा रहा है, z एक्सिस में जो जा रहा है वो w होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये नोटेशन क्या है? x y होगा या फिर y z होगा, z x होगा, उस हिसाब के आपको तीन प्लेन इमेजिन करने। और समेश, व्हाट इज टोटल शियरिंग एंगल? समेशन ऑफ दिस प्लस समेशन ऑफ दिस, okay, that is total shearing angle. So del u by del z plus del w by del x, so this is your gamma zx। तो गामा zx आप देखो, उसका इक्वेशन देखो, del w by del x, ये del w by del x है, प्लस del u by del z है, this is your del u by del z, it's a summation of that। now compatibility इक्वेशन की प्रोसीजर है कि आपको इससे इससे डिफरेंशिएट करना है, उससे इससे डिफरेंशिएट। But this is very basic. But why we are deriving compatibility equation? Because this strain and this strain, they are not related with each other. They are independent. मतलब आप अगर डिफॉर्मेशन देते हैं, बॉडी के अंदर डिफॉर्म होता है तो वो रेंडमली वो डिफॉर्म होगा, हमें उसको रिलेट करके एक जगह पे लाना है, so that our deflection is continuous. It should be a continuous function. Continuous, discontinuous function क्या होगा? अगर मेरा कोई जैसे कैंटिलीवर, मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा कैंटिलीवर भी, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मुझे मालूम है एक ही डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगी, एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। देयर विल बी ओनली वन यूनिक डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ये पॉइंट पे मैंने डिफ्लेक्शन ढूंढना है या फिर रोटेशन ढूंढना है, तो ऐसा नहीं ये जंक्शन पे लेफ्ट साइड में अलग रोटेशन होगा, राइट साइड में अलग रोटेशन, ऐसा कभी नहीं होता है। रोटेशन एट दिस पॉइंट इज यूनिक, वन इज वन, ओके, दिस इज थीटा बी, मींस थीटा बी, एक ही रोटेशन होता है। सो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन, नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट, द रोटेशन ऑल्सो, इट हैज टू बी यूनिक एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब एक ही क्वांटिटी, मतलब यूनिक, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में स्प्लिट आ जाएगा,
या फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर फ्रैक्चर मैकेनिक्स वो अलग ही स्टडी है, ठीक है। अगर आप ये बीम पे मेरा ये थीटा भी एक अलग है रोटेशन, और यहाँ पे कैंटिलीवर से मैंने कट किया, यहाँ पे थीटा सी एक अलग है, दोनों की वैल्यू अलग है, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। वी वांट कंटिन्यूस रोटेशन और कंटिन्यूस इवन द डिस्प्लेसमेंट, दैट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये पूरी प्रोसीजर कर रहे हैं कि we are relating strain displacement with each other. Now in elasticity case, why we are generating, there is mathematically also. जैसे mathematically अगर आपके पास this is internally statically indeterminate problem only, क्योंकि आप देखो कितने सारे unknown है, ठीक है। there will be 15 unknowns, I told you before also in my beginning of the class. In any general elasticity we have u v w, then we have sigma x, sigma y, sigma z, then we have gamma xy, gamma yz, gamma zx, then we have strain, 6 strain, 6 stresses and 3 displacement. So 6 plus 6, 15. And how many equilibrium in 3 dimensions? Only 6 equilibrium. So problem is anyway statically internally indeterminate, unknown ज्यादा है, equations कम है। जैसे ये आप एनालॉजी करो, ये प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पे unknown ज्यादा है, equations कम है, ठीक है। So even the use of compatibility equation additional will be used to solve problems only, because I need to have that many number of equations for solution of the problem. So अभी in further classes when we solve examples, that time you will see that how compatibility equations are also to be used for solving the example. We are basically trying to relate all the deflection together, okay, and similarly here we are trying to relate all the strain quantities together, means epsilon x, epsilon y, gamma xy। जैसे group 1 equation से हमें क्या मिला, we are able to relate epsilon x, epsilon y with gamma xy, right? That is group 1. Group 1 में हमें दूसरे इक्वेशन क्या मिले, we are relating epsilon y, epsilon z with gamma yz. Similarly epsilon z, epsilon x with gamma zx. Now third group, how we are relating shearing strain. We started with shearing strain, and we will try to relate that with the w and u and all. So epsilon x, epsilon y मीन्स हमने शेयरिंग स्ट्रेन से शुरू किया। पहले हमने क्या किया, नॉर्मल स्ट्रेन से शुरू किया, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को शेयर स्ट्रेन से कंपेयर किया। अभी हम क्या करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन से शुरू किया, वी विल बी कंपेयरिंग विद द नॉर्मल स्ट्रेन।